Okay, the next one topic or the next one law, that is a combined gas law, and this is known as ideal gas equation. So basically beta, this is the equation which gives the simultaneous effect of pressure and temperature on the volume of a gas. Okay, and this is basically for an ideal gas. So the equation which is the equation of a state which is applicable for ideal gas, that is known as the ideal gas equation, and it is the combination of all the gases till now whatever we have discussed. All right, so we tried our best that we will derive this equation, and in this one all of us we know before that कि Boyle's law जो होता है that gives effect of pressure on volume of a gas at constant temperature. Charles law gives the effect of temperature on volume of a gas at constant pressure. And so we are going to derive now equation which is applicable for ideal gas, or just have a note here that let करते हैं that volume of certain mass of a gas that changes from V1 to V2, and the volume of a gas change from V1 to V2 at pressure P1 to P2. याद रहेगा, वॉल्यूम चेंज हो रहा है V1 to V2, pressure is changing from P1 to P2, and temperature is changing from T1 to T2. Fine. Now we will see this it in two steps, step 1 and step 2, as I will explain it here also. First, suppose करते हैं that volume of a given mass of a gas changes from volume of given mass of a gas changes from V1 to V. V1 से पहले कहाँ चेंज हो रहा है, V तक चेंज हो रहा है. ठीक है, when it is applicable when pressure changes from P1 to P2. ठीक है, and at constant temperature, temperature यहाँ पे क्या रह गया है, constant, that is T1. So at constant temperature, so according to Boyle's law, P2 into V, that is equals to P1 into V1, और हम ये कह सकते हैं that V1 is equals to small v ले लो इसको, V1 नहीं लेते, हम क्या ले रहे हैं, V is equals to P1 V1 upon P2. ठीक है, तो हमने क्या कहा, पहले हमने कहा कि सपोज किया कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस changes from V1 to V, and in this same one pressure is changes from P1 to P2 at constant temperature, that is T1. तो हमने Boyle's law अप्लाई किया. Boyle's law के अकॉर्डिंग V जो था small v is equals to this V is equals to P1 into V1 upon P2. Now we move on to the step number 2 बेटा है. Step 1 ये थी. अब हम सपोज करते हैं that volume V changes to V2, and when temperature is changed from T1 to T2. ये वाली स्टेप 2 है. क्या हो गया, वॉल्यूम कितना चला गया, V जो है चेंज करता है V से V2 में, और टेम्परेचर कितना चेंज कर रहा है, T1 से T2 में. ये दो स्टेप में है, स्टेप 1 step 2. So T1 T2, but here we can see that pressure remain constant. It is here also it is P2, and here it is also P2. So pressure remain constant, that is P2. So here we will apply the another one law, and that is Charles law, and according to the Charles law, that is V upon T1 is equals to V2 upon T2, or here we can find out the value of V2
that is equals to V into T2 upon T1. ये कर सकते हैं. अब हमारी पहली इक्वेशन में स्मॉल v की वैल्यू ये आई है और यहाँ हमें ये सेकेंड इक्वेशन मिल गई. ठीक है. सो जस्ट हैव अ लुक हियर एंड हियर वी कैन से फ्रॉम इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू ऑफ v small v from equation 1 to equation 2. So after substituting the values, you can see v2 is equals to p1 into v1 upon p2 into t2 upon t1. या हम ये भी कह सकते हैं. अब इसको आप क्या करेंगे, इसको इक्वेट कीजिए और यहाँ आ जाएगा p1 v1 अपॉन T1. ये वाला ले लो बेटा. T1 इज इक्वल्स टू V2 इंटू, ये भी यहीं चला गया, P2 इंटू V2 अपॉन T2. ये हो गई. सो दिस इज नोन एज अ कंबाइंड गैस लॉ. ओके, ये हमारा क्या आ गया, कंबाइंड गैस लॉ. और यहां से हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल में है. सो हियर वी कैन से P इंटू V अपॉन T दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड विच इज इक्वल्स टू K. और हमें मालूम है कि K जो होता है वो N के प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ मोल्स और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के इक्वल है. और हम यहाँ पे कह सकते हैं दैट K इज इक्वल्स टू R इंटू N वेयर R इज proportionality constant. आप रिमूव proportional का symbol रिमूव करने के लिए we can use a proportionality constant and that is R in this equation where R is a universal gas constant. This is a constant value, but here it is a proportionality constant and which is also known as a universal gas constant. Fine. So from this हमने क्या कहा, PV upon T is equals to K and K is equals to R into N. So now just again substitute value of K in this now equation. So here we can write down PV upon T is equals to N into R. Instead of writing K, I just write down here N into R. Or from here I can also say that PV is equals to nRT. So this is an ideal gas equation. बेटा समझ आ गई है आप लोगों को, ये क्या बन गई मेरी ideal gas equation. So this is the derivation of an ideal gas equation. मैं एक बार दोबारा फटाफट आपको recapitulate कर देती हूँ इसको. Fine. So just have a look here. ध्यान से देखिए. हमने कहा that according to the Charles law and Boyle's law, we just take a one situation in which we just say that the pressure of suppose kara that volume of a given mass of a gas that changes from V1 to V2, V1 to V and P1 to P2, its pressure changes at constant temperature in first one state. ठीक है. सो वहां हमने बॉयल्स लॉ लगाया और V की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. इन द सेकेंड वन स्टेट वी said that pressure remains constant in this one step whereas volume changes from V to V2 and T1 to T2 temperature changes. ठीक है. सो यहाँ हमने क्या अप्लाई किया, चार्ल्स लॉ किया एंड फ्रॉम हियर वी जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ V2. हमें कुछ नहीं करना था. दिस वी कैन डू डायरेक्ट वे ऑल्सो कि P1 चेंज हो रहा है P2 में, V1 चेंज हो रहा है V2 में और T1 चेंज हो रहा है T2 में. बट वी वांट टू डिराइव वन इक्वेशन फॉर द आइडियल गैस एंड दैट्स व्हाई वी हैव कम अप और ब्रेक अप दिस डायरेक्ट चेंजेस into a intermediate position or into the two steps. So after that we just come up here that V2 is equals to V2 की वैल्यू निकाली और from there we derive that P1 upon V1, P1 into V1 upon T1 is equals to P2 into V2 upon T2. Here we can say that P into V upon T
is equals to constant, और constant को हमने K का, and all of us we know that in Avogadro law K is directly proportional to the number of moles, or we can say amount of substance. तो यहाँ पर क्या हुआ कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए हमने प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को रिमूव करने के लिए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का यूज किया, एंड K इक्वल्स टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इनटू number of moles. So that proportionality constant is also known as a universal gas constant. So put up the values. After putting the values of K in this equation, it becomes PV upon T is equals to NR, or again rearranging this equation, it gives us PV is equals to nRT. ठीक है बेटा, ऑल्टरनेटिव डेरिवेशन भी फटाफट से करा देती हूँ, एंड दैट सॉल्व फॉर दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे. ठीक है, इन तीनों गैस लॉज के. ऑल्टरनेटिव इक्वेशन में सिंपल है, जैसे हमें मालूम है कि अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ V is proportional to V is inversely proportional to P at constant temperature. According to Charles' law, V is directly proportional to T at constant pressure. ठीक है, this is alternative method, nothing else. At Avogadro law, we know volume is directly proportional to N at constant temperature and pressure. So this is equation 1, it is equation 2, this is equation number 3. Adding up all the equation, after addition of all the equation, we just come up to the conclusion that volume is directly proportional to 1 by P into T into N. Or I can say proportional. To remove the proportionality symbol, V is equals to R into 1 by P into T into N. So from here I can rearrange this equation, and after rearranging it becomes PV is equals to N into R into T. This is an ideal gas equation. ठीक है बेटा, ये इसके बाद आ जाता है that ideal gas equation in terms of डेंसिटी. ओके, इसको भी बता देते हैं हम जल्दी से. बहुत छोटा सा टॉपिक है और इजी है, सो जल्दी से इसको भी देख लीजिए बच्चे यहाँ पे. ठीक है, तो ऑल ऑफ अस वी नो that if we are saying that M is equals to mass of gas in grams, or capital M is equals to molecular mass, so N is equals to M upon M बन जाएगा. और हमें मालूम है PV is equals to nRT होता है, तो just put the value of N here, तो ये बन जाएगा PV is equals to M upon M into R into T. ठीक है, and which is equals to also N into R into T. So here I can write down, मैं इसको rearrange कर लूँ तो P is equals to बना M into M upon, ये V मैं नीचे ला सकती हूँ तो M into V into R into T. मैं जस्ट एक न्यू रिलेशनशिप डिराइव कर रही हूँ बेटा. सो M अपॉन V, मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डेंसिटी होता है. तो हेयर आई कैन राइट डाउन इट ऑल्सो दैट D into R into T अपॉन M. ये भी कर सकते हैं, एज वी नो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये कर सकते हैं. सो फ्रॉम हेयर I can just write down the one more relationship, and that is density is equals to P into M upon R into T. और molecular mass की terms में भी लिख सकते हैं that molecular mass is equals to D into R into T upon P. So this is the another one relationship.
ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हमारी न्यूमेरिकल्स के लिए होगी. टिल दैट टाइम जस्ट डू द प्रैक्टिस ऑफ ऑल दीज लॉज एंड द डेरिवेशन विच वी हैव डन टुडे. थैंक यू. So, in first part of the video, beta, we have discussed about the ideal gas equation, and now we are going to discuss about the nature of universal gas constant. In this one part, we are going to see that the different values of R on the basis of different units used. So as we have already see that PV is equals to nRT, and from here I can find out the value of R or calculate the value of R, that is equals to PV upon N into T. तो हम ये कह सकते हैं कि it is pressure into volume upon number of moles into temperature. यही होगा. Fine. Now all of us we know that R is equals to pressure, and pressure is nothing but it is force upon area into volume upon moles into temperature. ध्यान से देखिए इसको. And as we know that area is equals to length स्क्वायर. बेटा हमें डिफरेंट यूनिट्स में ये कैलकुलेट करना है बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू. सो इफ वी वेरी द यूनिट्स इन वाइल कैलकुलेटिंग द न्यूमेरिकल, सो वी शुड नो कि इसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज क्या होंगी और वो कैसे कैलकुलेट या डिराइव होती हैं. सो दैट्स व्हाई आई एम सॉल्विंग आउट इट हियर. एंड वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ का क्यूब, बिकॉज वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. तो अगर हम कह सकते हैं तो यहाँ पे हम इसे लेंथ क्यूब ले सकते हैं. सो फ्रॉम दीज वैल्यूज यहाँ पे आ जाएगा R इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन L का स्क्वायर इंटू L का क्यूब. दिस इज लेंथ अपॉन मोल्स इंटू टेम्परेचर. इजी है. अब यहाँ से कट कीजिए इसको. फाइन. एंड इट विल कम आउट दैट फोर्स इंटू लेंथ अपॉन moles into temperature. But all of us we know there is one more formula, that force into length is equals to work. Work is equals to क्या होता था? Work is equals to force into distance per unit time. Distance covered, sorry, not per unit time, it is distance covered. So that distance can be measured in length. So here we can write down it also, and therefore we can say that R is equals to work upon moles into temperature. ठीक है. तो इसका मतलब R represents work done per degree per mole or energy per degree per mole. ठीक है. अब numerical values if we want to find out, so just have a look here. Numerical values of R, that also, because this is important on your competitive exams, so that's why I am covering up this topic here. So just have a look here. अब हमें मालूम है कि when we want to calculate the numerical value of R, so इसके अंदर हमें क्या पता है that standard we have to take 1 mole of gas, 1 mole of gas that at standard pressure and 0 degree Celsius. कितने पे लेंगे? 0 degree Celsius occupy volume of 22.4 liter. ठीक है. So now let us calculate the values of R here. So अब आ जाते हैं. Come up here and just have a look that in the first one case when pressure is taken in atmosphere, ठीक है, volume is taken in liter, so value of R that is equals to P into V upon N into T. यही होगा.
तो यहाँ पे हमारी बेटा क्या आ जाएगी, STP पे ले रहे हैं हम ये वैल्यूज, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. So in that one case, if I am taking it in an STP, so temperature is equals to 273 Kelvin. So here the value is 1 atmosphere into 22.4 liter upon 1 mole into 273 Kelvin. So after solving out, the value comes out, that is 0.0821 liter per liter atmosphere per Kelvin per mole. So this is the first one value. Okay. Now in another one case, if we take pressure in atmosphere, okay, and volume in milliliters. Volume किस में लिया, milliliter में. Then in that one case also, अब हम directly मैं आपको ये values put करती हूँ. So R is equals to 1 atmosphere into 22.4 liter को convert it into milliliter. So how much it will become? 224,400. यही हो जाएगा. That 22400 milliliter. ठीक है. And upon rest value will remain same, 1 mole into 273 Kelvin. So अगर volume मुझे milliliter में दिया होगा, so the value of R, that will be 82.1 atmosphere milliliter per Kelvin per mole. Is it okay? Next one, you can express R value also when pressure is expressed in Pascal. This is the another unit of pressure. So when pressure is expressed in Pascal and volume is taken in cubic meter, ठीक है, then R जो होगा that will be expressed in joule. R will be expressed in joule per degree per mole. ठीक है, joule per degree per mole. Now per Kelvin कैसे होगा? Just have a look here. So R in that one case. Now 1 atmosphere or here we know that 1 mole of gas at 1 mole of gas at STP पे आपका 1 bar pressure होता है. कितना होता है? 1 bar pressure and 273.15 Kelvin. ठीक है बेटा. So we know that if we have taken this one, then volume which is taken cubic meter में ले रहे हैं. So in at 1 bar pressure and 273.15 Kelvin, that volume will be occupied. That will be 22.7 into 10 raised to the power minus 3 cubic meter. So now just put up these values for R. R की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई? अब बेटा 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर 5 पास्कल होता है. तो मैंने एटमॉस्फेयर की जगह पास्कल लिख लिया. मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम आपका क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना था. सो इट विल कन्वर्टेड इनटू क्यूबिक मीटर. लीटर को आपने क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट किया. सो it is multiplied by 22.7 into 10 raised to the power minus 3 cubic meter upon 1 mole. कितना? 1 mole into 273.15 Kelvin. ठीक है. So after solving this, it gives us 8.314 your Newton meter per mole per Kelvin. How is it possible? That all of us we should know that 1 Pascal is equals to 10 raised to the power 5 Newton per meter square. Newton per meter square. Okay.
So that's why we are using this equation, and because meter square में ही इसकी meter में values हैं, so instead of Pascal I just change the unit and write down Newton per meter square. So after solving out, this value will comes out, and we can also write down it 8.314 joule per mole per Kelvin, as all of us we know that Newton meter is equals to joule. कितने के बराबर होता है? Newton meter is equals to joule. So instead of writing Newton meter, we can also write down it in joule. Fine. So these are the units of universal gas constant in different values, or in different units of temperature and pressure. We can find out these values. Now beta, we will start doing the numerical on gas law. We have already done numericals on Charles law and Boyle's law in my previous one video, in which I discuss about these two laws. Today we are going to discuss the numerical on combined gas law, and first one by one we see the numericals. Like at 25 degrees Celsius and 760 mm of mercury pressure, a gas occupies 600 ml volume. ठीक है? The question is, what will be its pressure at a height where temperature is 10 degrees Celsius and volume of gas is 640 milliliter. ठीक है? So if we are talking about the solution, always before solving out, just see what we have to find out. तो यहाँ क्या निकालना है हमें? What we have to calculate, that is pressure. ठीक है? Now, and what is given to us? So first of all, always write down whatever is given to you in numerical. तो हमें क्या क्या given है, हम पहले वो लिख लें. तो P1 is equals to 760 mm mercury pressure, and P2 we have to find out. Volume is given to us 600 ml. ठीक है? And volume 2, where volume 2 is 640 ml. ठीक है बच्चा? Temperature T1 is given to us 25 degrees Celsius. It is given in Celsius, and our value is we have, that is in Kelvin. So first of all we have to convert degree Celsius into Kelvin. So add up 273 plus 25, ये ऐड करके बेटा आपका आ जाएगा 298, 538, 729, 298 Kelvin, and here T2 is given 10 degrees Celsius. So 273 plus 10, which is equals to 283 Kelvin. So this is the value of T2. Now apply the combined gas law equation. क्या होती है वो? P1 V1 upon T1 is equals to P2 V2 upon T2. यही हो जाएगी. Write down the values of these quantities. तो आपके पास क्या क्या है? P1 is 760 into 600 upon 298 is equals to P2 into 640 upon 283. मुझे P2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. So P2 is equals to 760 into 600 into 283 upon 298 into 640. यही होगा. So calculate all the values, and after calculation it comes out almost 676.6 mm mercury. ठीक है? So this is the value, or this is the numerical which we have done. The another one numerical in the next one, मैंने पहले ही statement लिखी हुई है, so we just solve out that. ठीक है? तो ये देखिए, there is a one more numerical. Calculate the moles of hydrogen H2 present in a 500 ml sample of hydrogen gas at a pressure of 1 bar and 27 degree
Celsius. So बच्चे what we have to find out in this one, that is n. Fine. So according to the equation जो हमें given है, हम ये value लगा सकते हैं that PV is equals to nRT. ठीक है, तो here pressure is given to us 1 bar. ठीक है, 1 bar. Volume is equals to 500 ml. Okay, but pressure is given in bar, so हमें बार के लिए क्यूबिक डेसीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो 500 ml है, तो क्यूबिक डेसीमीटर में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा? 1 ml इज इक्वल्स टू 10 raised to the power 3 minus 3 क्यूबिक डेसीमीटर. तो मिलीलीटर से हम क्या कर लेंगे? 10 raised to the power minus 3 क्यूबिक डेसीमीटर. यही कन्वर्ट हो गया. ठीक है, देन temperature is given to us, that is equals to 27 degrees Celsius. Now convert it into Kelvin. So 27 plus 273 करेंगे, that is equals to 3 7 3 10 7 2 9 10 and 300 Kelvin. ये बन गया. R की वैल्यू is given to us Kelvin cubic decimeter के लिए. The value is 0.083 bar cubic decimeter per Kelvin per mole. Now easily you can calculate the value of n. N is equals to, according to the formula, क्या बन जाएगा? PV upon RT. Now just write down all the values and solve it in the numerical. It can be easily done. कैसे होगा? Pressure is 1 bar into 500 into 10 raised to the power minus 3 cubic decimeter. R की वैल्यू है 0.083 बार क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल पर कैल्विन into 300 कैल्विन. यही हो गया. दैट आफ्टर सॉल्विंग इट आउट, इसको सॉल्व करिए बेटा, 0.0201 मोल, और वी कैन से इट गिव्स अस 2.01 into 10 raised to the power minus 3 mole. Fine. So similarly you have to do more practice of numericals. I will give you one assignment based on these numericals and you have to do the practice of those numericals. Thank you.